So welcome everyone. Today's topic is how to deal with anger and frustration. So do you feel anger and frustration in your day-to-day life? If yes, type yes in the chat if you feel anger is in your day-to-day life. अगर आपको गुस्सा आता है, type yes. And if this is not an issue for you, if you can handle it and it is always under control, type no. Otherwise, type yes if anger is an issue for you or if anger flares up at unexpected times. And okay. Yeah, some people are saying no. So that means that it's not an issue. Wonderful. So now where does anger arise from? And before that, anger is natural, normal, and healthy. Many of us, we believe ke gussa nahi aana chahiye. We should not have anger. Anger kharab hai. Anger galat hai. But anger is natural, normal, and healthy, provided we know how to deal with it. Provided we don't let it damage ourselves and others. Provided we don't take action that is detrimental to others. Provided our anger does not create rifts in our relationships. So that's why dealing with anger is very important. And there is a subtle difference between anger and frustration. So when we are frustrated, that frustration may lead to anger. हमें frustration से anger हो सकता है. Do you agree? And can someone share? I would like one or two people to share. When do you feel anger? आपको गुस्सा कब आता है? You can raise your hands and then one by one I can call out your name and then you can unmute yourself and you can share. Yes, Rajendra ji. आपको गुस्सा कब आता है? When do you feel anger? जब चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है या हम जैसा चाहते हैं उससे ऑपोजिट में हो, या किसी को हम बार बार एक काम को एक तरीके से करने के लिए बोलें और वो अपने तरीके से करे, या हमारे तभी वो फ्रस्ट्रेशन भी होता है और गुस्सा भी आता है. This is what I feel. Thank you, Rajendra. You are saying कि जब आपके मन मुताबिक चीजें नहीं होती, when things don't go as per your wishes, then you get angry. And second thing which you said was that when you assign a task to somebody and that person does not perform it as you have instructed him or as you desire him or her to perform, then you get frustration and that frustration leads to anger. Am I right? Thank you. Poonam ji, you tell us, do you get angry and what makes you angry? रविंद्र जी, गुस्सा आता है, ऑब्वियसली सबको आता है गुस्सा, मुझे भी आता है जब कोई अपनी बातों को जबरदस्ती थोपता है और आपको समझने की कोशिश नहीं करता है, तब मुझे गुस्सा आता है. Yes. And let me assume here that this person is really close to you. It's not like some stranger whom you have just met couple of days ago. वो आपको समझने की कोशिश नहीं करता. Yes. नहीं, क्लोज वन के साथ ही है कि अगर आप समझाते. Exactly, because the closer the person is, हमारी expectations भी ज्यादा होती हैं और उस पे गुस्सा भी आएगा. Yes. And if this is an acquaintance or a friend, we might not feel so much angry, but if it is a loved one, a family member, a close person, then we feel the anger is more. Am I right? Yes. So the same behavior, but different people brings up different levels of anger within us. किसी के साथ आता ही नहीं है. When we look at a child, बच्चा जब
चीजें कई बार तोड़ देता है. Sometimes kids, they break things, expensive things. लेकिन उस पर, बच्चों पर हमको इतना गुस्सा नहीं आता. Do you agree? रविंद्र जी, अब मुझे नहीं आता, मतलब बच्चों पे तो नहीं आता, सीरियसली नहीं आता. हाँ, बच्चों पर नहीं आता. And why? If we are the same person, if it's a distant person, he or she does something, we don't get angry, or if we get angry, we get mildly angry. If a child does something bad, we don't get angry. But if it is a loved one, close person, a spouse, brother, sister, or say mother-in-law, father-in-law, or parents, then we get angry. Have you ever thought what makes us behave differently with different people in same situation? Has it ever occurred to you? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन सबसे अलग अलग होती है हमारी सबके. Expectations अलग-अलग होती है. You are right. So it is not the person or what they do or their behavior. It is our expectation which leads to anger. Do you agree? 100%. Thank you, Manish ji. So expectations are a reason why we feel anger. And also, if you are in a job and your office has a toxic environment, there is politics, backbiting, bitching, and you get angry, but you cannot express your anger, and you come home and you get angry on your spouse, on your children. That also happens, right? तो आप ऑफिस में गुस्से नहीं दिखा सकते, बट जब आप घर आते हैं तो आप घर में गुस्सा दिखाते हैं. तो मिसबिहेव किसी और ने किया and somebody else is paying the price. आपका गुस्से का खामियाजा कोई और भुगत रहा है. Is it fair and does it happen? Type yes in the chat if you have seen this happen with you or with someone around you. Where anger transference, this is called anger transference. जब आपका anger किसी और पर transfer हो जाता है, and not these days, but in olden times, when I was a kid, I saw a lot of it happening. Fathers, they are frustrated at work, but they cannot talk back to their boss, and the children will bear the brunt of their anger. So anger transference bhi hota hai. We have seen 2-3 things ke anger comes with people who are close to us, and it comes due to expectations, and there is also anger transference. And when frustration becomes anger? So I would again like someone to share from your own life. When do you feel that, when does frustration become anger? Or it could be irritation, because it all starts with mild feelings. And then it takes the form of anger and worse, rage. Rage is a peak anger where you lose sight of your judgment and discernment. जिसे हिंदी में विवेक कहा जाता है. आप विवेक खो बैठते हैं और गुस्से में आप ऐसा आचरण करते हैं जिससे दूसरों को और खुद को नुकसान पहुंचता है. So can someone share कि when does frustration become anger? You can raise your hand and you can share. Ravinder ji,
इसका कोई टाइम लिमिट तो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक चीज मैंने नोटिस करी है कि अगर हम उस पर्टिकुलर फ्रस्ट्रेशन या उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में सोचते रहें तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाता है एंगर में। कभी कभी इंस्टेंट होता है, कभी कभी टेक्स वीक्स और मंथ्स, बट होता जरूर है। Okay. Thank you, Manish ji. You are saying that when you repeatedly think about that, Yes. and then frustration becomes angry. And let me pose another question to you. What if that offending, behavior by somebody or something which has happened outside, it happens only once? Does it lead to anger? Or if it gets repeated, if that same behavior is repeated day in and day out by somebody, then that frustration becomes to anger, or they do it only once and you think about it and then it becomes anger? Yes. In which only case? only once वाले केस में कई बार चीजें खत्म हो जाती हैं, दोबारा याद भी नहीं आती, लेकिन अगर हम खुद सोचें तो आ जाती हैं। लेकिन अगर जो रिपीटिशन में है वो जल्दी गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो डेली हमें खुद ही उस चीज के लिए याद दिला रहा है। Right. Thank you. So, repeated incidents lead to anger. Right. So we are just exploring what anger and frustration is, and anger has many cousins, और उनके cousins के नाम क्या हैं? There is irritation, there is botheration, there is distress, there is restlessness, there is sometimes anxiety. They're all cousins of anger. They're all negative emotions. But we don't know when all of this, when we don't address them. हमें हल्का सा इरिटेशन हुई, हमने उसको इग्नोर कर दिया. ऐसी चीजें होती रहती हैं. These are part of life. I mean, we should not bother. And someone says something, it pinches us, and we ignore it. But what happens? Repeated incidents, they keep piling up, and then anger erupts. Anger has a quality that it erupts. There is a lot of intensity in a short amount of time. That's what anger is. Irritation comes, it's like mild prick of a pin, and then it subsides and it doesn't bother you much. It is the intensity of anger which troubles us. And now let us examine what happens when we are angry. So again, would someone like to share what happens to you when you are angry? How do you experience anger? Would someone like to share? हमारा पल्स बढ़ जाता है, हमारी बीपी बढ़ जाती है. I would request that please raise your hand, and then one by one we can hear you. Yes, Ravinder ji. Sorry, I didn't raise hand. No problem. Yeah, please go ahead. जैसे जब फ्रस्ट्रेशन या एंगर आता है तो पल्स भी बढ़ता है, बीपी भी बढ़ती है और माइंड में इंटेंसिटीज बढ़ जाती है. So what exactly goes in your mind when you say intensity of the mind increases? What exactly goes in your mind? कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो ब्रेन प्रोड्यूस करता है उस समय में, जो चीजों को, पल्स को भी बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है और वो पूरी एक्टिविटी मसल्स को स्टिफ करता है. इस तरह से कई चेंजेस आते हैं हमारे अंदर. Thank you. So you are saying there are physiological changes. Our heart rate, our blood pressure, they all change, right? So you feel different physically and also emotionally. So thank you, Rajendra ji. Yes, Poonam ji, would you like to share? What happens to you when you are angry? बोल के खत्म करना है अभी. मतलब बोला, जो बात हुई हुआ, खत्म हुआ. पहले क्या था कि अंदर रखते थे,
फिर वो फ्रस्ट्रेशन लेवल जो आपने बोला कि वो बढ़ता था, फिर एकदम से बर्स्ट होता था। लेकिन अभी क्या है कि बोला और खत्म किया उसको वहां पे और भूल गए। लेकिन Okay. हाँ, बोलना है उसको। So you feel like blurting it out, यस। right? Yeah. Thank you. एक बात और भी है, Yeah. क्योंकि ये हमारे माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि जब तक हम एंगर पूरा निकाल नहीं दे तब तक शांति नहीं मिलती है, और यदि माइंडसेट ऐसा है तो हम उसके ऊपर में दूसरी तरीके से विचार करके भी अपने आप को शांत कर लेते हैं। Am I clear? Yes. So you are right. You are saying that it also depends how we deal with it, and that depends upon our mindset. Thank you. So we have seen that there are a lot of changes which happen. So anger is physical. There are physical feelings involved. Some people, they feel lot of, turmoil, something in churning in their head. Some people might feel in their stomach, in the pit of their stomach. They feel some restlessness, something there when they are angry. Some people might feel it in their heart, in the center of their chest. And plus, you feel emotions. Anger is emotional. So there, you feel a lot of emotions. And obviously, there are thoughts. So it is, anger is mental also. So we feel these things at different levels, physically, mentally, emotionally. And how we deal with it depends upon how we perceive anger and how much control do we feel at that moment. If we lose judgment, if we lose sight of wisdom, things are out of our control. And the best way or the best time to deal with anger is when it is simmering, when it has not yet become anger. And to do that, we will look at some techniques, and we will also do them practically during the session so that you can see, okay, how to deal and whether these techniques they'll work for you. So again, I would need a volunteer who can share one incident which usually brings anger within you. So please raise your hands if you are okay with sharing. And this is something, because this is being recorded, so it will be shared publicly. So if there is something which you can share with us, okay, what gives you anger, what brings anger within you, we can process that, we can have a look at that and see how we can deal with it. So would someone like to share, please? You can raise your hand and then we can look at the situation. Yes, Poonam ji. रविंद्र जी, जब कोई झूठ बोलता है ना तब. Okay, when someone lies to you, yes, you get angry. And yes. again, if a अगर stranger मुझे lies to पता you, चला, अगर Pardon? मुझे पता चला कि वो झूठ, अगर नहीं पता चला तब तो फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन Yeah. अगर पता चला कि वो झूठ था तभी Yeah. गुस्सा आएगा. Okay. So let me tell you, today's date is 26th January. Yes. 26 January? No. No, so and it's a lie. Oh, Right. अच्छा. I'm lying to you. You know that it's a lie. Today's 9th and I'm saying it's 26th. But you did not get angry. Why is बट that? ये गुस्सा दिलाने की बात नहीं है, ये मतलब कुछ वैसा, मतलब कुछ बहुत वैसा हो. So tell me, na. So you said when someone lies to you, I gave you an example and you didn't get angry. You laughed actually. हाँ, मतलब ये तो, हाँ, ये हंसने की बात है, मतलब हाँ. वैसा होना चाहिए, झूठ भी वैसा होना चाहिए ना जिससे आपको So गुस्सा आए. tell me, so clarify to me that what type of lie and by whom makes you angry? By again close ones. Yes, that's what I was looking. When someone close to you. Yes.
100%. Lies to you, or because we are talking to you, when someone close to me lies to me. Okay. Now, if someone lies about trivial things, does it make you angry? Or if there are specific things, when someone close to you lies to you about specific things, can you recall an incident in recent past when someone close to you lied to you and it made you angry? But I can't share, Ravinder ji. So I told you if you can share publicly. So thank you. So we would need another volunteer then. We need someone who can share publicly an incident which brings them anger. So thank you, Poonamji. Would someone else like to share? Rajendra ji has raised his hand. नहीं, मैं दूसरी बात बोलने के लिए रेस किया कि Okay, so we'll come to that later, but let's first. Okay. Would someone like to share an incident which brings anger to you and which you can share publicly? So shall I assume that whatever makes you angry is so personal that you cannot share it publicly? Yes, Ritu ji, Ritu Kaushal ji, please. सबसे पहले आपको नमस्ते, बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। नमस्ते। सामने से कहना चाहूंगी आपको हैप्पी न्यू ईयर, बाकी सभी मेंबर्स को Same to you. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। देखिए, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ और रेकी में एक लंबे समय से हूँ, तो मुझे एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि हम सभी के ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं और मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट है जानवर। जब मैं आपका ट्रिगरिंग पॉइंट है, एक्चुअली आई कुडंट, कैन यू रिपीट प्लीज? मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट है जानवर। कहीं भी मैं पशुओं के साथ बुरा बर्ताव देखती हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है। और जनरली मैं पहले तो मेरा एग्रेसिव सा रिएक्शन हो जाता था जब जूजू छोटा था। ऑब्वियसली मैं भी छोटी थी तब। तो about your anger, I would like to, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, we would love to hear about it, but tell me about the aspect of anger. When did that anger came and did that anger persist? आपको गुस्सा कब आया और कब आता है? मैं ऑल द टाइम गुस्से में ही रहती थी तब, और अभी भी मेरे साथ ये समस्या है कि मैं किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार देखती हूँ। ओके, एनिमल क्रुएल्टी, तो जब आप एनिमल क्रुएल्टी देखते हैं तब आपको एंगर आता है, am I right? मुझे और आता आपका है जी एकदम से वो होता है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इस चीज को मुझे डील करना पड़ेगा और मैं बहुत अच्छे से सक्सेसफुली डील कर रही हूँ। Wonderful, wonderful, thank you. So you said you had a traumatic incident of loss of a loved animal, right? Exactly. अब तो कोई भी नहीं रहा, सारे वो पिछली सर्दियों में सारे ही पूरे हो गए। Great. And now tell me, when you see similar incident repeating, somebody is mistreating animals or someone is harming animals, do you still get angry? Do you still get triggered? Definitely it happens with me, but one thing now I understand that we should look the solutions. Right. Great. That's why we are here. So today we will look at solutions. Yeah. Let me ask you a question. When someone is being cruel to animals, it triggers anger within you. You do certain things to deal with it, right? When you see cruelty against humans, जैसे अभी very unfortunate incident, it happened that one young woman, 20 years old, was dragged by a car. So did that trigger anger in you? इसमें मुझे एंगर से ज्यादा ये, देखो एंगर का ये इशू है भी। No, you can answer in yes or no. Okay, did that incident trigger anger in you? नहीं आया. Okay, right. And then again there was another incident that in an airline, one man, he urinated on a female.
सॉरी, मुझे इस पे बहुत हंसी आई क्योंकि हंसी आई तो गुस्सा नहीं आया. So and that is very very interesting. Thank you, Ritu ji. So what we have here, three different incidents similar in nature. In one, someone is being cruel to animals, it triggers anger in her. And then there is a human being who was killed in a very very violent fashion, it and was painful. unfortunate, but it did not bring anger in her. So today's topic is anger, so we are focusing on that, and that's very interesting point. And another incident which should not have happened, someone was mistreated another human being, a female, and it brought laughter again. And we are not judging you, and all we are saying is that why did it happen. रविंदर जी, मेरा यहाँ पे सवाल है. हाँ जी पूनम जी, मैं आपके सवाल पर आऊंगा. Just give me 1 second. Let me finish this point and we'll come to you. Ravinder Shankaran here. I am Kapil Chawla's friend. Yes, please. Can you just hold on a second? Let me finish my point and we'll come to you. And you can raise your hand and I'll take your point. Okay. Thank you. So similar incidents bring different responses. And is it surprising for you? Type yes in the chat if you feel that it is surprising that similar incidents कि जानवर के साथ कुछ हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इंसानों के साथ हो रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा. And is it surprising to you? Because you might get angry on this. Okay. So Poonam ji, we'll come to your question now. And then Kritik ji, I will come to you next. Yes, Poonam ji. यस रविंद्र जी, जैसे अभी उन्होंने बोला, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि मेरी बहुत क्लोज फैमिली में भी मैंने एक देखा है, एक लेडी है उनको जो बहुत जानवरों से बहुत प्यार करती है, मतलब बहुत ज्यादा. लेकिन उनका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, स्पेशली मेरे को पेरेंट्स के साथ बहुत अजीब लगता है कि वो एक जानवर को इतना सेवा कर रही हैं, लेकिन वो अपने एक बूढ़े माँ बाप को इतनी तकलीफ देती हैं. तो मुझे लगता है ये किस टाइप के इंसान है. हम किसी को यहाँ जज नहीं कर रहे हैं, आई एम सॉरी, किसी को जज नहीं कर रहे, अपना अपना तरीका है. बट आपका ये बिहेवियर मेरे को, क्योंकि अगर आप कोई कहीं पे भी क्रुएलिटी हो रही है, आपका इक्वल होना चाहिए. हाँ, इक्वल होना चाहिए. यस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी विल गेट टू दैट. We will exactly answer that point. आपके आंसू हर जगह इक्वली आनी चाहिए. हाँ, आना चाहिए, होना चाहिए, बट होता नहीं है. और हम देखेंगे क्यों नहीं होता है, और जब आपको उसका रीजन पता चलेगा, and then you can appreciate कि why it happens differently in different situations. Thank you. And yes, Kritik ji, you can please. Yeah. Hi, Ravinder. I'm Shankaran, Kapil Chawla's friend. Hello, Shankaran ji. Hi. Yeah. This is regarding the recent Delhi incident, where the one woman was cruelly killed. Yes. See, when I hear or see these type of incidents, anger is one side, but it is creating a fear in my mind as well as to find to know the root cause of the problem. I'm afraid where we are heading towards. I am afraid of the next generation. I'm really concerned about the education system. All those youngsters are very well educated. Board education. They all done board education, but it has not created any values in their mind, and they have not given respect to even to and we have to give respect. We are respecting. They are not respected. We feel a human being, and they have been dragging for maybe hours together. These more than anger is one side, but it creates a fear and concern in my mind about the whole society and value system. Thank you, Shankaran ji. Welcome to our session, and thanks for bringing up this point. That more than Ritu ji, I'll come to you. Let me address Shankaran ji. I'll come to you. Just give me a second. So you are saying fear and concern
rather than anger is what you are dealing anger is with. one side, of course. They should be given. I would say, even if they are not really not thought about killing or any revenge, but they were not respected. They were not shown a bit of compassion to the fellow human being, and they should be given death sentence. That is one thing. But more than that, I am afraid of this type of incidents. Okay. Where we are heading as a country. This is a country where we had a lot of rishis, and we created a value system long time back. And what we are seeing is completely opposite to the value system which we created, our ancestors created. You're right, and it is very concerning, and we will take that up because today's our focus is on anger, and we will touch upon what you said, but mainly we'll deal with anger. We also had a session on fear, and we will address this. But as I said, that today's focus is on anger. So values and how we are dealing in society, what we are turning into, those are very genuine concerns. Thanks for bringing them up. But as I said, that today's let's focus on anger. And when we will look at anger deeply, partly what you have raised will get addressed. And if they don't get addressed, you can raise that question again in the end. So thank you for bringing that up, Shankaranji. Yes, Rituji, what were you saying? What did you want to? मैं ये बोल रही थी कि अभी पूनम जी ने एक बात बोली कि तो ओके, सो इफ यू आर एड्रेसिंग पूनम जी का पॉइंट, तो वो हम सेपरेटली ले लेंगे. आप मुझे दीजिए, मैं बोलना चाहूंगी, वरना रह जाएगा, मेरे पेट में दर्द होगा. हाँ, नहीं, वो हम कर लेंगे. लेट्स जस्ट कीप इट फॉर सम टाइम बिकॉज़ इट इज वेरी नेचुरल फॉर थिंग्स टू कम अप. जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में हमें एंगर. हाँ, आई एग्री, आई टोटली एग्री विद यू, बट लेट्स फोकस ऑन अभी. अगर मैं एक दो पॉइंट्स जब बताऊंगा तो चीजें अपने आप क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी. थैंक यू, वेटिंग. या, थैंक यू. सो what we saw, that we behave differently to same incidents, and our expectation is that we should react similarly, like anything which is cruel should bring up anger inside us, or at least repulsion, that why things are happening, why violence is happening in the society, be it with humans, be it with animals. But it brings up different reactions or same emotion in different, the intensity is different, and it is surprising. And let us dig deeper why same incident brings different levels of anger or different emotions. Because listen carefully, we don't become angry due to what happens. जो हो रहा है बाहर, उसकी वजह से हमें गुस्सा नहीं आता. फिर किस वजह से गुस्सा आता है? What makes us angry? What actually makes us angry is due to what is inside us. We get angry because of what's inside us. हमारे अंदर जो है उससे गुस्सा आता है. अगर हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम है कि जानवरों को दुख पहुंचाना गलत है, हमें जानवरों के साथ गुस्सा हो रहा होगा, जानवरों के साथ बुरा हो रहा होगा, हमें गुस्सा आएगा. आप देखेंगे वेरी अनफॉर्चुनेट, वायलेंस अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग्स होती हैं, but we get outraged when somebody from our tribe, when I say tribe, someone we identify with. अगर मेरे धर्म, मेरे समुदाय, मेरे जानने वाले या मेरे ग्रुप के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे गुस्सा आएगा. And let's take an example, Israel versus Palestine. कुछ लोग इजराइल का साथ देंगे, कुछ पैलेस्टाइन का साथ देंगे. रशिया वर्सेस यूक्रेन, कोई रशिया का साथ देगा, कोई यूक्रेन का साथ देगा. लोग दोनों तरफ मर रहे हैं. But we get outraged when a particular community member is lynched.
and at other time somebody else they get outraged when उनके कम्युनिटी मेंबर को मारा जा रहा है, जबकि दोनों गलत हैं। ह्यूमंस के साथ हिंसा गलत है, चाहे वो जानवरों के साथ हो चाहे वो इंसानों के साथ हो। So is it now becoming a little bit clearer कि हम जिसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ कुछ गलत होगा तो हमें दुख होगा और गुस्सा आएगा। What we choose to identify with, and this happens due to our memory. I have seen at least 5 riots in my lifetime. My own house was burnt down right in front of our eyes, and our neighbors, they were egging on the mobs to come and kill us. So naturally, I was young, I was 14 years old. बहुत गुस्सा आया, दुख भी हुआ, गुस्सा आया, and that anger turned into rage, and it took me years to get rid of that anger. And what transformed that anger was wisdom and understanding that violence is a part of life, cruelty is a part of life. बुरी चीजें वो जीवन का हिस्सा है. It's like there are two shades in life, light and dark, and they both coexist. आप कभी कहीं पर ऐसा नहीं देखेंगे कि there is total peace. कोई ऐसा जगह नहीं है पृथ्वी पर जहां पर हिंसा ना होती हो, जहां पर बलात्कार ना हो, जहां पर युद्ध ना हो, जहां पर डिफरेंसेस ना हो, जहां पर चोरियां नहीं होती, जहां पर लोग धोखाधड़ी, बेईमानी, जालसाजी, फर्जीवाड़ा, ठगी, छल या कपट ना करते हो. It is everywhere. But how do we deal with that? And how do we view those incidents? When something happens, जैसे शुरुआत में राजेंद्र जी ने कहा था, हमारे मन की जब नहीं होती तब हमें गुस्सा आता है, और हमारे मन की तो रोज नहीं हो रही. हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ में बुरी खबरें ज्यादा होती हैं, अच्छी खबरें कम होती हैं, लेकिन हम फिर भी रोज न्यूज़ पढ़ते हैं. हम क्यों पढ़ते हैं रोज न्यूज़? अगर उसमें गंदगी है. See, let me give an example. You go to the choices of restaurants and you choose the best of food, hygienic food for yourself and your family. आप अपने और बच्चों के लिए सबसे अच्छा, स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाते हैं. पानी अगर आपको पीना है, आप मिनरल वाटर खरीद कर पीते हैं. अगर आपको कहा जाए कि कोई दूषित पानी है और आपको पता है वो दूषित है, वो आप नहीं पिएंगे. सड़ा हुआ, गला हुआ, स्टेल खाना आप नहीं खाएंगे. लेकिन आप न्यूज़ रोज देखेंगे, उसमें झगड़े भी देखेंगे, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि हम क्यों अच्छा खाना खाते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे. हम क्यों स्वच्छ पानी पीते हैं कि हम स्वस्थ रहें. लेकिन हम दूषित विचार अपने अंदर रोज डालते हैं. जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखते हैं, झगड़े देखते हैं. तो to deal with anger, first of all, is to restrict the negative thoughts coming into us. उसका जो सोर्स है वहीं से जब नहीं आएगा. So let me now, because time is short, we have to finish this within 1 hour. How do we deal with anger? First of all, we have to look at what makes us angry. It is not the person who is saying things. It is not the incidents which are happening, but it is something which is going on within us. Because when an incident happens, we assign a meaning to it. अगर कोई हमें कुछ ऐसा बोलता है जो हमें बुरा लगता है, हमें लगता है ये हमारा दुश्मन है, ये हमें पसंद नहीं करता, ये हमें नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए ये ऐसा बोलता है. Because we assign that meaning, and it may or may not be true, but for us it is true, and it goes on in the subconscious mind level. हमारे जो beliefs हैं, जो meaning हमने assign किया है एक incident को, वो हमारे subconscious mind में चला जाता है, and
we start reacting based upon those meanings. So what we can do is, step number 1 to deal with anger, first reduce exposure to negative thoughts. Okay, जब again I am taking very unfortunate incidents, जब कोई किसी के वो हत्या करके उनके टुकड़े काट देता है, उन्होंने कहीं टीवी पर या कहीं किसी सीरियल में देखा था जहां ऐसा था, कोई हॉरर मूवी देखी थी, कोई सीरियल किलर पे कुछ बना था, अगर वो नहीं देखते तो शायद वो उनको गुस्सा आता तो वो उस तरीके से बिहेव नहीं करते. तो फर्स्ट स्टेप is to reduce exposure to negative thoughts. Then second step, let me bring it here so that they are together. It should be up here. Second step, what we can do is examine our thoughts and beliefs. And how do we examine our thoughts and beliefs? It is by documenting what we are seeing. And जब हम journal में, take a journal and write down with pen and paper, okay, what is happening. And to take an instance, here, जैसे कि one person said something and other person feels that I need to respond to that. Why do I need to respond? Because when someone physically attacks us, our brain releases certain chemicals. When we are physically threatened, and when our ideas, thoughts, and ideologies are threatened, our brain releases the very same chemicals. Is that surprising and shocking to hear? कि जब हमको physically कोई threaten करता है, हमारे brain में कुछ chemical release होते हैं, जैसे राजेंद्र जी ने कहा था कि some chemicals get released, और जब कोई हमारी ideology को, हमारे thoughts को टारगेट करता है, अटैक करता है या इवन क्वेश्चन करता है, वो ही केमिकल्स हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं. So that's why if someone attacks our ideology, it is same as physically attacking us. We feel threatened, and that's why we feel like responding to that. Yes, राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे फ्रेंड ग्रुप से जो कॉलेज वाले हैं उनके आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. If you can raise your voice a little bit. Okay. हमारे फ्रेंड्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें still आपका ना आवाज कम है. It is barely audible. Oh my God. सुन रहा है? Am I audible now? Yes, it is a little bit better. मैं बोला कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स लोग जो हैं वो दो ग्रुप है, एक मोदी जी के फेवर में और एक मोदी जी के अगेंस्ट में. ये रोज लड़ते रहते हैं. हाँ, वो होगा. देखिए, वो कुछ भी हो सकता है. वो इंडिया के फेवर में, इंडिया के अगेंस्ट, वो कोई भी मुद्दा हो सकता है. वो इसलिए है कि वी टेक साइड्स. अब देखेंगे कि जब अर्जेंटीना फ्रांस का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, उसमें जो हार गए उन्होंने कुर्सियां तोड़ दी, आग लगा दी, जला दिया. तो उसमें साइड लेने का नहीं. आप जिसको मानते हैं, जिसके साथ में अलाइन हो गया, जिस आइडिया के साथ, थॉट के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, या ट्राइबल आइडेंटिटी मैंने आपसे कहा था. तो कोलकाता में अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप जीतने पर जश्न मनाया गया, और कोलकाता का अर्जेंटीना से कोई लेना देना नहीं है. कोलकाता की कोई टीम नहीं गई, इंडिया की टीम नहीं गई. इट इज बिकॉज व्हेन यू एसोसिएट, मैं वही कह रहा हूं, जो मीनिंग आप एसोसिएट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप, एज वी सेड, के reduce exposure to negative thoughts, examine our thoughts and beliefs, और उस बिलीफ में जो हम मीनिंग असाइन कर रहे हैं उसकी वजह से हमें गुस्सा आता है. हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हो रहा है, सरकार हमारे खिलाफ है, कानून हमारे खिलाफ है, कोर्ट ने हमारे खिलाफ गलत जजमेंट दी, इसलिए हम कोई प्रतिक्रिया करेंगे. और ये इसलिए हो रहा है. And you can see कि people are there on both sides of the divide. वो एक लीडर, उन लीडर के समर्थक भी हैं, उनके आलोचक भी हैं, और उन लीडर के खिलाफ जो बोलते हैं उस लीडर के भी आलोचक भी हैं, समर्थक भी हैं.
तो सही और गलत क्या है? सही गलत जो हम मानते हैं वो है। और एक व्यू वो है कि आफ्टर एग्जामिनिंग आवर थॉट्स एंड बिलीव्स, देन वी हैव टू सी कि हम जब गुस्सा करते हैं तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं। और गुस्से पे काबू पाने के लिए थर्ड थिंग विच वी कैन डू इज meditation or a spiritual practice, and this has to be done daily. Any meditation or a spiritual practice, what that does is you gain wisdom कि ये सब जो दुनिया में हो रहा है ये एक सृष्टि का हिस्सा है. It is part of whatever is happening and it is a learning experience. जब टीचर हमें डांटते हैं तब हमें गुस्सा नहीं आता, बुरा लगता है, दुख होता है, लेकिन हम उस टीचर की हत्या नहीं करना चाहते कि उसने हमें क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि he or she, our teacher, has our best interest at heart. That's why they are treating us that way. Same way, अगर हम जो भी हमारे साथ बुरा कर रहा है या हमारी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उनके साथ अगर बुरा कर रहा है, उसको हम इस तरीके से लें कि दिस हैज समथिंग टू टीच मी, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस. अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है, मैं बुरा नहीं करूंगा. अगर जब हम अपने थॉट्स को एग्जामिन करते हैं, जैसे उस व्यक्ति ने शराब के नशे में फ्लाइट में कुछ किया, तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता. और उसका कुछ लोग ये मीनिंग निकालेंगे शराब पीना गलत है, क्योंकि शराब के नशे में यू लूज सेंस, आपकी विजडम काम नहीं करती, आपकी डिसर्नमेंट काम नहीं करती, और आप ऐसे काम कर बैठते हैं कि आपको जेल देखनी पड़ सकती है, और किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति इतना अभद्र व्यवहार आप कर सकते हैं. तो ये मीनिंग भी आप असाइन कर सकते हैं. कुछ लोग इसमें मीनिंग असाइन करेंगे, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक इन मॉडरेशन, 2 पैग से ज्यादा नहीं पीने चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा पिएंगे तो कुछ अनर्थ हो सकता है. लेकिन चूज द मीनिंग विच सर्व्स यू, एंड चूज द मीनिंग, जो 4th पॉइंट है, आफ्टर यू हैव एग्जामिन्ड योर थॉट्स, and there are different ways of self-inquiry, then choose an empowering meaning. तो वो चॉइस हमारे पास है कि अगर राइट्स हो रहे हैं which are unfortunate, people are losing their life, तो उसका हम ये मीनिंग अगर लगाएं, सरकार हमारे खिलाफ है, हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है, हमारे रिलीजन के खिलाफ है, हमारी ट्राइब के खिलाफ है, और हमको तो न्याय मिल ही नहीं सकता. You know, in 1984, thousands of people were killed on the roads. उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, सरकार के लोग, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे, और कई ऑलमोस्ट 40 साल होने जा रहे हैं, उसका न्याय नहीं मिला. कुछ इक्का दुक्का लोगों को सजा मिली है. उसका रिस्पांस कुछ लोगों ने लिया, उन्होंने हथियार उठा लिए, और जिनको उन्होंने दुश्मन माना वो उनको मारने लग गए. और एक लॉयर जो वो करीब 35 साल तक केस लड़ रहे थे, आई थिंक 30th एनिवर्सरी थी या 34th, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने पौधे बांटे कि हम पेड़ लगाएंगे. तो वो भी एक रिस्पांस है. वायलेंस इज अ रिस्पांस इन एक्सचेंज ऑफ वायलेंस और इन रिस्पांस टू वायलेंस, कि हम लंगर लगाएंगे या हम पौधे लगाएंगे या हम बच्चों को एजुकेट करेंगे. You can always choose an empowering meaning and an empowering response, and this comes through wisdom. तो उसके लिए wisdom कहाँ से आएगी? When we will listen to people,
नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में काटे और जिन्होंने उनको जेल में डाला था उनके टीम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत जो क्रिकेट टीम थी साउथ अफ्रीका की उसके लिए उन्होंने बहुत किया। और जब वो बाहर आए उनमें वो बिटरनेस नहीं थी। ही वॉज वेरी यंग, 27 साल के थे शायद जब उनको जेल हुई। एंड 27 years he spent in solitary confinement, but he gained wisdom कि जब वो बाहर आए तो उन्होंने कम्युनिटीज को जोड़ने का काम किया। And he became president of that country. Even he was urinated by the white police. ये शंकरन जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? Yeah, even Nelson Mandela was urinated by white police on his face. Yes, he was. Thank you. And what I would say that gain wisdom through words, and words could be books, lectures, YouTube videos of others who have conquered anger. ये हम कर सकते हैं। And if we follow these steps and do it consistently, what you can see is that your anger comes. Anger will always come. लेकिन next time it will be milder और mild हो जाएगा। And we have finished our time, but I will say that practice non-violent communication. This is a special form of communication where you do not blame the person. You just express, especially in relationships, कि जब आप ऐसा बोलते हो मुझे ऐसा महसूस होता है। You don't say कि आप ऐसा क्यों बोलते हो। In a relationship, you don't blame your partner कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। You just say कि जब आप ऊंची आवाज में बोलते हो ना, मेरे दिल धड़कने लग जाता है, मैं सहम जाता हूं और मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं काम नहीं कर सकता, मैं अपने ऑफिस में लेट हो जाता हूं। वो सारी चीजें होती हैं। और आप देन से there are 4 things in non-violent communication. अभी समय कम है तो very briefly I'll say, you express your observations without judgment, you express your feelings and your needs. What do you want? मैं चाहता हूं कि आप 5 मिनट निकाल के सिर्फ मुझे सुनो। एंड यू डोंट इम्पोज, कोई अल्टीमेटम आपने नहीं देना। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं मायके चली जाऊंगी। और आप 10 बार बोलते हो, एक बार नहीं जाते तो उनको लगता है कि ये तो फिर उसका असर नहीं होता, वो इफेक्टिव नहीं रहता। आप उनसे कहें कि let us set up 15 minutes time in a week where we will just listen to each other. And आप कहिए, are you willing to consider this? अब ये मत कहे कि मुझे टाइम दो, आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मुझे सुनते नहीं हो, आप मेरे को इग्नोर करते हो, आप यू टेक मी फॉर ग्रांटेड। ऐसे आप कम्युनिकेट ना करें। आप कम्युनिकेट ऐसे करें कि जब आप मुझे समय नहीं देते, जब हमारी बात नहीं होती है, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। Are you willing to consider setting up some time where we can listen to each other? तो उसमें क्या है that you are giving that person that option of considering. आप अल्टीमेटम नहीं दे रहे। तो ये 6 स्टेप्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, we will see कि our anger will slowly, it's not like Rome was not built in a day, एक दिन में it's not a switch you can switch off anger. Anger and frustration हमारी जिंदगी में कम होता जाएगा and wisdom will start taking its place. So if you feel that these 6 points which I have shared, these are useful, type yes in the chat. If you feel that they will work for you, you can type yes in the chat. Thank you. So I know still some people have things to share. So what I would suggest is that you can get in touch with me on PM, or you can attend further sessions. हम
23 दिनों तक ये सेशंस रखने वाले हैं, and this is a very deep subject and everybody has points and positions, so we would love to hear from you, but today we have time only this much, so we will come and discuss more of these topics for the 23 days. Thank you very much that you took out time and you attended these sessions, and we will come to you with more sessions every day till 29th of January. So thank you very much. You have a good day.